Good evening, everyone, and welcome to my live stream. So, today we are going to cover coordinate geometry of class 9. So, we will be doing few questions from NCERT Exemplar book. So, this is already mentioned in the video description and on the thumbnail. Okay, so let's begin. So, we'll start off with easy questions. Let me write them. Plot the points xy given by the following table. Okay, so we are required to plot these 6 points. Okay, so if you want, you may use a graph paper. Okay, I am going to draw the axis on this paper. So we have two coordinate axes, right? We have x axis and y axis. The horizontal axis is the x axis और vertical axis को y axis बोलते हैं. So let me draw. So if you are doing on a graph copy, it is fine. अगर plain page पे कर रहे हैं, so we have to be careful while giving the marks. Okay. So let me name this x and x dash. This is x axis, y and y dash, and they intersect at origin. Okay. So we will mark the points. So I am just marking the points. I am taking 1 centimeter as the gap. Okay. So doing so we need to be very careful while marking the points, especially when we are drawing on a plain paper. So I am just taking 5 points because the highest value is 5. Okay, you may take according to your convenience. So let us mark the points now. Okay. So as we know, from the origin towards the right, all the points are positive. Okay, so 1 2 3 4 5, and towards the left of the origin all the points are negative. So this is -1, -2, -3, -4 and -5.
Okay, points above the origin are positive, so this is 1, 2, 3, 4 and 5, and points below the origin, that means below the x-axis, are also negative. Okay, so now we will start plotting the points. So just a quick recap of the name of the quadrants. So this is the first quadrant and moving in the anti-clockwise direction. So this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is the fourth quadrant. Okay, so on the first quadrant, both the x coordinate and y coordinates are positive. On the second second quadrant, the x coordinates are negative while the y coordinates are positive. This is the third coordinate. Here both x and y coordinates are negative, and this is the fourth quadrant. Here the x coordinates are positive while the y coordinates are negative. Akhil Pandey says hello. Hello Akhil. Welcome. Welcome back. Okay, so let's plot the points. So the first point will be, we can name the points now. We have 1 2 3 4 5 6. We can name them A B C D E F. So the first point, in the first point, the x and y both are positive. So how we are going to plot? X coordinate is 2, positive 2. So this is the x axis, so this will be our x coordinate. Okay, keeping this x coordinate, we will have to take y 4. Y, that means y towards the above the x-axis. So this point will lie on the first quadrant. ये point first quadrant में ही आएगा. So this is 2 and this is 4. So this is the problem when we do it in plain paper. We have to be place the ruler such a way that this looks parallel to the y-axis. Okay, so we have to draw a line till the point 4. You can avoid these lines when you are drawing on a graph paper, otherwise we have to. Okay, so we will mark the point here, and like I said, you can name them. This is point A, where x coordinate is 2 and y coordinate is 4. I hope this is visible, or else I will use pen for drawing. I think this should be visible. Okay, so let's take the second point where x is 4 and y is 2. Here also both the coordinates are rather positive. So this point will also point B. We can name them these two coordinates as point B. So this will be 4 on the x-axis and 2 on the y-axis. So just like the previous one, we will place the ruler and just make sure कि ये y-axis के साथ parallel है. Okay, and then we will take 2 points and then we will join. Okay, so this is our point B, 4 and 2. Okay, next point, as we can see, suppose this is point C. The x coordinate is minus 3, but the y coordinate is 0. So for the x coordinate, we can take the point here, but since we do not have any y coordinate, अगर यहाँ पे y coordinate कुछ है नहीं, so this point will lie on the x axis. Okay, ये तो याद रहेगा, यहाँ पे आएगा ये point. So
We will name it point C and we will write the coordinates of C -3 and 0. Okay. Next, -2 and 5. So here x coordinate is -2 and y coordinate is 5. That means this will lie on the second quadrant because यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव है. ओके, सो x is -2, so we will start here and the value of y coordinate is how much? 5. So we will place the ruler parallel to the y axis. Okay. So ये हो गया पॉइंट D -2 and 5. Next, x is +3 and y is -3. So this will lie on the fourth quadrant. Okay, because the x is positive and y is negative. Okay, so x is positive, so this is 3 and y is -3. So we'll place the ruler parallel to the y axis and so let's name this point E, 3 and -3. Okay, and the last point is 0 and 0. So these are the coordinates of the origin. So this is 0 and 0. So this is how our graph will look like. Okay. Okay, so let's move to the next question. Chandragupta says hello. Hello, hello Chandragupta. Quite a name you have. Plot the following points. Plot the following points and write the name of the figure. Achha. Figure obtained by joining them in order. So what are the points? P -3 and 2, Q -7 and -3, 6 and -3, and S is 2 and 2. Okay. So the question says plot the following points and write the name of the figure
obtained by joining them in order. In order means first we will plot point P, then Q, then R, and then S, and then we will join them. Okay. So let me do one thing. Let me draw the diagram with a pen. Otherwise, it may not be visible if I draw by pencil. But एक बात है कि ये कभी पेन से नहीं करना है इसको, ठीक है. Always use pencil. And आई डोंट नो अभी किसी किसी स्कूल में ग्राफ पेपर में करवाते हैं, किसी किसी स्कूल में प्लेन पेपर में करवाते हैं. सो गो अकॉर्डिंग टू योर स्कूल. स्कूल में जैसे कहते हैं वैसे कीजिए. सो 7 6 ओके. आई होप कि गलती ना हो इसमें, अदरवाइज आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन. So this is origin, this is x dash, y and y dash. So I am taking a gap of 1 centimeter between the points. 5 4 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay. No. This is 1 2 3 4 5 6 7, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 and minus 7. This is 1 2 3 4 5 6 7 and minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 and minus 7. Okay, so let us plot the points and then see what figure we get. Okay, let me get a small ruler. Just give me a minute. Okay, the first point is P, where x coordinate is minus 3 and y coordinate is 2. So x coordinate is minus 3 and y coordinate is 2. So this point will lie on the second quadrant. Okay, so very carefully. So this is x minus 3. So we'll place the ruler here, and then y is towards 2. Okay. Okay, so this will lie somewhere here. Okay, so unlike the previous diagram, we are not going to join this point without x and y. Why? Because we have to join the 4 points among themselves. तो इनको join नहीं करेंगे, otherwise जो shape मिलना है वो नहीं मिल सकता है. ठीक है. Next, q is minus 7 and minus 3. X is minus 7 and y is minus 3. So this point will lie on the third quadrant. Both the coordinates are negative, is it? So x is minus 7. So this is our minus 7
and y is towards minus 3. So we'll place the ruler and make sure that this is parallel to the y-axis. So we'll take 3 centimeter here. So this should be, yes, this is okay. Next, next is point R, where x coordinate is positive and the y coordinate is negative. So x coordinate is positive and y coordinate is negative. That means this will lie on the fourth quadrant. Okay. So I hope this is parallel. Yes, this looks parallel. Okay. So this line has to parallel. I mean, has to align parallelly with the y-axis. So this is 6 and this is minus 3. So we'll take 3 centimeter. Okay, this looks good. Okay, and the last point S, which is 2 and 2 both are positive. So this will lie on the first quadrant. So this is 2 and this is 2 on the y-axis. So okay, so this will lie here. Okay, so we have marked on the points. So थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है because I am drawing on a plain paper. Okay, now we have to join the 4 points and see what figure we get. Okay, so let's join. So this looks like a trapezium. So let's join and confirm. Revanth, hello Revanth, welcome back. So today I have chosen a very easy topic, no Revanth? So today I am going only subscriber only stream because I just want to make sure my subscribers join my stream. Otherwise कल के stream में बहुत इधर उधर के लोग join होके यहाँ वहाँ की बातें करके. So I have decided to go subscribers only for today's stream. Okay. So this is the figure obtained after joining the 4 points PQRS. So this figure is a trapezium. Okay. So we'll complete by labeling everything. So this is P. P coordinates of P are 3 and 2. Minus 3 and 2, sorry. This is Q. Coordinates of Q are minus 7 and minus 3. This is R. Coordinates of R 6 and minus 3. And this is S 2 and 2. So we will conclude this question by writing. Is it visible? Yes, yes. I shall write here. I will take some little space. Therefore, write the name of the figure obtained by joining them. Okay. The figure obtained by joining the points is a trapezium. Okay. Okay. So before moving to the next question, let me just clarify one thing. Okay, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना. I have seen मैंने पिछले कई सालों में देखा है बच्चे इस चैप्टर को बहुत इग्नोर करते हैं. Fine, this is one of the easiest chapters in class 9.
बट इसमें करना तो बहुत इजी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना होता है, पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं, तो लेकिन बच्चों के नंबर कटते हैं कहाँ पे, एक्यूरेसी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बढ़िया डायग्राम बना रहा हूँ, बात वो नहीं है, बट एक तो है ग्राफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बहुत से लोग फ्री हैंड कर देते हैं बिना रूलर लिए, एक तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, मार्किंग्स सही होना चाहिए। अगर ये सही हो करते हैं तब इट इज़ फाइन, अदरवाइज मैंने देखा है ये चैप्टर इजी 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 करके बाद में जाके इसी में नंबर घटते हैं। 5 मिलना चाहिए 4 मिल जाता है, 3 मिल जाता है ना। सो वही बात माइंड में रखना है, अदरवाइज दिस इज यस दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। एटलीस्ट क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, और आज हम क्लास 9 का ही कर रहे हैं, लेट्स सी क्लास 10 का भी करना होगा। So let's try a few more questions. Plot the following points and check whether they are collinear or not. Okay, let's see if the points are collinear or not. Plot the following points and check if they are if they are collinear or not. तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, सो विल टेक 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई एम गोइंग टू सॉल्व 2। तीसरा आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से, मैं तीनों लिख दूंगा बट मैं करूँगा 2 ही। See, this is the reason I always advise students to use pencil। अभी मुझे फिर से बनाना होगा इसको, मेजरमेंट गलत ले लिया मैंने।
So this is x, x dash, y, y dash, and origin O. So this is 1, 2, 3, 4. This is -1, -2, -3, and -4. This is 1, 2, and 3. This is -1, -2, and -2. So this is the solution for question number 1. Okay. So let's plot the points. We have 1 and 3. So this is 1 and 3. This will lie somewhere here. Okay. Then we have -1 and -1. So this will lie on the third quadrant. So this will lie somewhere here. And we have -2 and -3. So इसका measurement ले लेते हैं. So x is -2 and y is -3. तो ये यहाँ पे आएंगे कहीं पे. ठीक है. So yes, these 3 points are collinear. If we join them, we can get a straight line. ठीक है. So let us join and confirm. Okay. So this is 1 and 3. This is -1 and -1, and this is -2 and -2. Okay. So we can write the points are collinear. Points are collinear. Okay. Next, question number 2. ओके. और वी कैन डू वन थिंग. इसी ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं ना. क्यों दूसरा बनाना. इसी में कर लेते हैं. ओके. सो वी विल डू. लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर पेन. इट विल बी ईजियर. बट आप लोग को पेन यूज़ नहीं करना है. मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि कैमरे में दिख जाए अच्छे से. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 2. सो वी हैव 1 and 1. So this is on the. Okay, so this is 1 and 1. ठीक है. Next point is 2 and -3. X is 2 and y is -3. So that means this point lies somewhere on the fourth quadrant. Is it? X is 2 and y is -3. So we have to take the measurement. ये 2 and -3 हो गया. ठीक है. And last is -1 and -2. So x is -1 and y is -2. So this will lie somewhere here. So this. Okay, this looks like a triangle. So these basically ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है. तो हम लोग ज्वाइन कर देंगे इनको. ठीक है. दिखा देंगे कि कोलिनियर नहीं है. ओके. लेट अस राइट द पॉइंट्स फर्स्ट. This is 1 and 1. ये है 2 -3. और ये है -1 and -2. So these are clearly non-collinear points. है ना. Okay, so we'll write. I'm writing here. The points are non-collinear. The points are non-collinear. ठीक है. तो आप लोग ये तीसरा वाला खुद से ट्राई कर सकते हैं अगर चाहे तो.
तो ये हम लिख देता हूँ मैं HW होमवर्क. Hello Lucy Warren, how are you? And welcome to my subscribers only live stream today. Points A 5 3, B minus 2 3, and D 5 minus 4 are three vertices of a square. Are three vertices of a square ABCD. Plot these points on a graph paper, but we are not using graph paper, so we'll plot them on a plain sheet of paper, and hence find the coordinates find the coordinates of the vertex C. Okay, so we have to plot the points A, B, and D. Okay, and ABCD is a square, they have already told us, and we have to plot the points A, B, and D, and then we have to find the coordinates of the vertex C. Okay, let's proceed. Sorry to do egg do sorry pass sorry.
Okay, so this is x, this is x dash, this is y, this is y dash, and origin এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত. This is -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and -1, -2, -3, -4, -5, -6, and -7. Okay, so let's plot the points one by one. A is 5, 3. X coordinate is 5 and y coordinate is 3. So this is 5. We'll mark the 5 here, and then we will have to take our ruler and then place it parallelly to the y-axis, and then 3. So take 3 centimeters so that the point is accurate. So this is 1 centimeter, 2 centimeter, and 3 centimeter. Okay. So this is our point. Okay. Then B is -2 and 3. I will label the points once I have finished doing. Okay. So this is -2 and 3. So this will lie on the second quadrant. This is -2. -2 and 3. So 1 centimeter, 2 centimeter, and 3 centimeter. Okay. Next. So we don't know what D is, what C is. Sorry. So D is 5 -4. That means x coordinate is positive, y coordinate is negative. So this point will lie on the fourth quadrant. So this part is missing. So কি হ'ব, x কিমান হয়, x ৰ কাৰণে আছে 5. So এইটো 5, y কাৰণে আছে -4. ঠিক আছে, তো আমি 5ত পাতি লওঁ, আৰু 5ত এনেকৈ পাতিম যাতে এইফালে আমি y এক্সিছৰ লগত পেৰেলেল থাকে স্কেল পাত. গ্ৰাফ থাকিলে প্ৰব্লেমে নাছিলে, এইটো এতিয়া গ্ৰাফ নাই কাৰণে আমি অলপ কেয়াৰফুলি কৰিব লাগিছে বস্তুটো. ঠিক আছে, আৰু y আছে -4, তো আমি 4 চেণ্টিমিটাৰ ল'ব লাগিব এইফালে দেই. য'ৰ পৰাই লওঁ, এতিয়া মই 10ৰ পৰা লৈছোঁ, 9, 7, 8, 6 তেনেকৈ 4 চেণ্টিমিটাৰ হিচাপটো কৰি ল'ম আৰু দেই. চ' এইটো 9, তাৰমানে 1 চেণ্টিমিটাৰ, 2 চেণ্টিমিটাৰ, 3, 4, আৰু 4টো ইয়াৰ লগত মিলিও থাকিব তেতিয়া, হয়নে? ঠিক আছে, অঁ কৰিলে নাই দাগটো? অঁ কৰিলোঁ. ঠিক আছে, চ' আহি গ'ল 3টা পইণ্ট আমাৰ, হয়নে? তো এইটো কিমান হ'ল? ফাইন. চ' উই হেভ 3 points. Let us mark the points. So this was our point A. This is A, 5, 3. This is B, -2 and 3. We don't know what C is as of now. This is D, 5 and -4. Acha. When we will move to class 10, we will use the distance formula. So since today we are discussing class 9 coordinate geometry, so I am not going into what distance formula is. So I am doing it in a simple way. So let's find out what is the distance from point A to point B. Okay, so point B, this is 5. Okay, that means we have 5 units. No? From 0 to 5 is 5 units, and from 0 to -2 is 2 units. So basically the distance between A and B is 7 units. Okay. So similarly, the distance from the point D and the point B also has to be, distance from the point D to the point C also has to be 7 units. In the same way, the distance from A to D, so point A to the x-axis is 3 units, and
from the x-axis to this point is 4, so this is 7. So we have confirmed. Actually ये confirm नहीं करने से भी square है ही, so all sides have to be of 7 units. So I am just confirming it whether my diagram is correct or not. ठीक है, so 7 यूनिट्स ना, तो यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट हो गए है ना, नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है, तो और 2 यूनिट आगे बढ़ा लेना है इसको। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं पहले, है ना। तो इसमें अभी थोड़ा लिखना भी होगा हमें। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का अभी कोई मेंशन नहीं है, ये क्लास 9 का है। सो 9 के बच्चों को जैसे लिखा जाता है वैसे ही मैं लिखाऊंगा अभी। ठीक है, वरना कोई कोई आके बोलते हैं अरे ये तो डिस्टेंस फार्मूला करना है, ये है वो है। क्लास 9 में डिस्टेंस फार्मूला का मेंशन नहीं है। ठीक है, करेंगे तो कोई गलती नहीं है उसमें। एनीवेज, फ्रॉम द ग्राफ, और वी कैन सिंपली राइट हियर ए बी equals to AD equals to 7 units. Okay. Since ABCD is a square, so AB equals to BC equals to CD equals to DA equal to 7 units. ठीक है, now we can complete our diagram. So पहले 5 यूनिट ले लो ना, 200 का ले लो, 1 2 3 4 5 6 और 7. So this is point C. So I am joining the point or point and hence find the coordinates of vertex. तो join करने के लिए बोला नहीं है, but okay we can do one thing, ये dotted line से हम लोग join कर सकते हैं ना। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? सो x कोऑर्डिनेट इज -2 and y कोऑर्डिनेट इज -4. So I will write -2 and -4. Thus coordinates of C are -2 and -4. तो इनको ज्वाइन कर देते हैं. लेट अस ज्वाइन देम यूजिंग डॉटेड लाइंस. ठीक है, तो ये बन गया हमारा स्क्वायर. ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं. 12:30 बजने वाले हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं. सो मे बी आई विल स्ट्रीम विथ ए डिफरेंट टॉपिक टुमारो, क्योंकि ये थोड़ा इजी टॉपिक है क्लास 9 के लिए. तो आई थिंक एक ही सेशन काफ़ी है इसके लिए. Draw a triangle ABC whose
vertices are, क्या क्या है vertices? A 0 2, B 2 minus 2, and C minus 2 2. Okay. तो यहाँ पे बोल ही दिया है कि ये ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है. So we are going to get a triangle. So we have to draw it neatly. ठीक है. ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं होने से भी हो जाएगा, छोटे से ग्राफ में ही आ जाएगा ये. तो मैं देख सकता हूँ अभी भी कुछ लोग बने हुए हैं मेरे स्ट्रीम में, जिनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि यू हैव बीन देयर टिल द लास्ट पार्ट ऑफ माई स्ट्रीम. थैंक यू सो मच. एंड आई होप आप स्ट्रीम को लाइक कर चुके होंगे एंड इसको शेयर भी कीजिएगा. सब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 and -4. So 0 and 2. So this is origin and 2 means this will lie on the x-axis. ये quadrant किसी भी quadrant में नहीं आता है. So this is our point. This is point A. Okay. Then we have point B, where x coordinate is 2 and y coordinate is -2. So x is 2 and y is -2. मतलब कि this is on the fourth quadrant. Okay. So इसका measurement ले लेते हैं एक बार. Okay. And C is -2. So x is -2 and y is 2. So x is -2 and y is 2. So this will lie on the second quadrant. Okay. So let us mark the points. I am using a different color pen. Okay. So that this is visible. So this is A. 0 2. This is B. 2 -2. And this is C. -2 2. Let's join them. A and B, B and C, and C and A. So this is our triangle. If you want, you can do some shading. शेडिंग यहाँ इतना ज़रूरत नहीं है. अगर आप ग्राफ में करते हो तो शेडिंग कर दीजिएगा ताकि डायग्राम थोड़ा प्रोमिनेंट दिखे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ट्रायंगल ABC.
ठीक है, सो ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को है। लेट्स एंड आवर स्ट्रीम टुडे। देखते हैं कल दूसरे किसी चैप्टर के साथ स्ट्रीम की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और ये स्ट्रीम ख़त्म होते ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसको चैनल के लाइव सेक्शन में देखा जा सकता है। ओके देन, थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर स्टेइंग एंड वेकिंग अप इतना लेट। आप लोग इतने लेट मेरे स्ट्रीम तक में जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को पता चले। एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। एंड कमेंट्स में मुझे इन्फॉर्म कीजिए अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए रिगार्डिंग माई स्ट्रीम, और इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी अदर सब्जेक्ट्स let me know in the comment section. Anyways, thank you once again. Take care and bye bye. Good night.